Hi everyone, I extend a warm welcome to you all in the sessions of Cbme pattern Microbiology. In the continuation of our series, in which we are discussing microbiology under the heading of Micro to Remain Micro, this is going to be our next topic of discussion, and in this, we will be covering our central nervous system and as per the Cbme pattern, right? So, dear friends, this complete CBME based CNS microbiology includes 12 hot topics, 12 important topics, which we will be discussing in subsequent videos. So, not taking much of your time, let us now start with the very first topic, that is enumerate the agents responsible for causing meningitis, right? So, बेसिकली दिमाग से रिलेटेड दो तीन ही बीमारियां रहती हैं, मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस एंड ब्रेन एब्सेस. तो मेजर जो है इसके अंदर पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, इन्यूमरेट द एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मेनिंजाइटिस. सो लेट अस नाउ बिगिन. सी माई pattern of making you aware of different agents causing meningitis is a unique pattern, because the question can be enumerate the viral agents, enumerate the parasitic agents. Okay, इस तरीके से भी हो सकता है. अदरवाइज इफ़ यू आर गोइंग इनटू अ वाइवा, सो इन वाइवा दे कैन आस्क यू कि भैया ओल्ड एज के अंदर कौन सा ज़्यादा है, नियोनेट्स में कौन सा ज़्यादा है, लाइक दैट. ओके, एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ BAQ, पोटेंशियल ब्रीफ आंसर क्वेश्चन, दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू. सो लेट अस नाउ डिस्कस द वेरी फर्स्ट थिंग कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं जिनके अंदर प्रोस्थेटिक वॉल्व है. देखिए, नॉर्मली जो नेचुरल वॉल्व्स रहते हैं आपके पास में, एट्रियल वॉल्व, मिट्रियल वॉल्व, जो सर्जरी को पेशेंट्स जाते हैं, दे हैव गॉट अ प्रोस्थेटिक वॉल्व, दैट इज़ नॉट अ नेचुरल वॉल्व. तो प्रोस्थेटिक वॉल्व के अंदर जो पेशेंट्स जिनमें प्रोस्थेटिक वॉल्व होता है, उनमें मेनिंजाइटिस इज मोस्टली कॉज्ड बाय स्टैफ एपिडर्मिडिस. स्टैफ एपिडर्मिडिस. पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस of meningitis, like once the surgery has been completed, so post surgical complication of meningitis is most probably caused by, or mostly caused by, staph aureus. If you add one more, that is staph aureus as well as pseudomonas, these both are responsible for causing meningitis in IV drug abusers. So I have told you round about three things up till now. Prosthetic valve में you have staph epidermidis, जिनकी सर्जरी हुई है पोस्ट सर्जिकल प्रॉब्लम्स के अंदर या सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस के अंदर में, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इज स्टैफ ओरियस. जब मैं आपको स्टैफ ओरियस की वीडियो करवाऊंगा, मोस्टली इट विल बी कवर्ड इन स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन. दैट टाइम वी विल सी दैट द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, right, the surgical site infection is caused by staph aureus. And if you combine this staph aureus with pseudomonas, it turns out to be the IV drug abusers के अंदर जो meningitis का cause है. अब हम अपना ज़िंदगी की गाथा पढ़ेंगे. ठीक है जी, ज़िंदगी की गाथा कैसे पढ़नी है, नाउ लेट मी ट्राई एंड टेल यू. सबसे पहले आप एक बुज़ुर्ग इंसान से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ये बुज़ुर्ग इंसान है. नाउ बुज़ुर्ग इंसान के अंदर में यू हैव स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मेनिंजाइटिस. बुजुर्ग इंसान, ओल्ड एज के अंदर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. नाउ वंस दिस ओल्ड एज पर्सन डाइज, ठीक है, जैसे ही वो मरेगा, अगली बार वो किसी प्रेग्नेंट लेडी से उसकी आत्मा जो है वो शरीर के साथ जन्म लेगी. एंड प्रेगनेंसी के अंदर द इम्पॉर्टेंट कॉज इज लिस्टीरिया. ओके, सो इन ओल्ड एज इट वॉज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड इन प्रेगनेंसी इट इज़ लिस्टीरिया. ठीक है, बुजुर्ग में कौन था, निमोनी. प्रेग्नेंट लेडी में कौन है, लिस्टीरिया. ओके, अब प्रेग्नेंट लेडी के वॉम में, यूट्रस में नियोनेट्स रहने वाले हैं. एंड नियोनेट्स, ठीक है, नियोनेट्स से आपको क्या याद रखना है, इफ़ यू कैन सी वॉम का शेप ऐसा होता है, लाइक दिस, है ना. दिस इज जस्ट लाइक अ बेल शेप इट, राइट. सो नियोनेट्स का निमोनिक भी है बेल. नाउ व्हाट इज दिस बेल. ठीक है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, E फॉर इकोलाई एंड L फॉर लिस्टीरिया. ठीक है ना, इधर से माँ वाला ही उठा करके लिस्टीरिया. फाइन, बेल. एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन ऐड क्लेप्शिला, इफ़ यू डोंट वांट इट्स ओके. फाइन. अब नियोनेट जो था बेल, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई एंड L स्टैंड्स फॉर लिस्टीरिया, वो बड़ा होगा एंड यंग चिल्ड्रन बनेगा. तो इन यंग चिल्ड्रन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा
इज द वन, है ना. यंग चिल्ड्रन होते हैं कैसे, उनकी नाक बहती रहती है, नाक बहना इज इन्फ्लुएंजा, तो यू कैन रिमेंबर hemophilus influenza. Okay, now once he or she is a teenager, ठीक है, तो टीनेज वाले इंसान, है ना, टीनेज एडल्ट्स, ओल्डर एडल्ट्स, है ना, इन सब के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और न्यूमोकोकस ये वही हैं जो फर्दर ओल्ड एज में भी सेम चीज़ करने वाले हैं, है ना, इफ़ यू रिमेंबर. सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बिकॉज टीनेज एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स, ओल्ड एडल्ट्स एंड ओल्ड एज न्यूमोकोकस. ओके, and one more is your Neisseria meningitis. Neisseria meningitis. Okay. तो ये जीवन की गाथा से भी आप याद रख सकते हैं. उससे पहले आई टोल्ड यू दैट इन प्रोस्थेटिक वॉल्व स्टाफ एपिडर्मिडिस, देन इन पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस के अंदर स्टाफ ओरियस, आईवी ड्रग एब्यूजेस के अंदर स्टाफ ओरियस एंड स्यूडोमोनास, ओल्ड एज वाले के अंदर न्यूमोकोकस, उसके बाद मदर आने वाली है तो मदर के अंदर लिस्टीरिया, देन नियोनेट होगा बेल इज द निमोनिक, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई एंड लिस्टीरिया. देन थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा, यंग की नाक बहनी है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंड आफ्टर दैट यू हैव यंग के बाद में टीनेजर, तो टीनेजर के अंदर आई टोल्ड यू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और न्यूमोकोकस इज द वन. ओके, लाइक दैट. सो if a person has undergone splenectomy, for example, again this is again very important, if a person has got splenectomy, has undergone splenectomy, तो कुछ भी नहीं है, intentionally actually I have written like this, see, pneumococcus meningitis listeria, pneumococcus meningitis, not listeria but then hemophilus influenza. means splenectomy के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो देखो जो टीनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे ना वो है, ठीक है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड मेनिंगोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड मेनिंगोकोकस जो भी टीनेज के लिए थे वो ही है, ठीक है. एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आपका ये यंग चिल्ड्रन के अंदर था, ठीक है. सो देयर फ्रॉम देयर आई हैव पिक्ड दिस वन. ओके, सो जो यंग चिल्ड्रन के अंदर थे एंड जो टीनेज के लिए थे, दोनों के दोनों आर अगेन योर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लीनेक्टोमी, ठीक है. किसी के अंदर अगर ये कॉम्प्लीमेंट C5B2 C9 इनका डेफिशिएंसी है, देन देयर इज़ योर मेनिंगोकोकस, तो ऊपर से ये एक नीचे उठाया गया है लिखने के लिए मेनिंगोकोकस, ठीक है. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ विच आई एम डिस्कसिंग. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फंगल मेनिंजाइटिस इज Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans is the most common cause of fungal meningitis. Clear? Right? See, the cause of meningitis from rickettsia is your Borrelia. Okay, this is a tick bite, not from rickettsia. The common cause of arthropod-borne meningitis is Borrelia, ठीक है, because see this tick is a arthropod, ठीक है. So arthropod-borne अगर कोई पूछता है आपसे तो that is a Borrelia. Okay, and from swimming pool if you are acquiring, this is your Naegleria, ठीक है. From swimming pool if you are acquiring, this is a Naegleria which is responsible. ओके, सो इफ आई समराइज, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोस्थेटिक वॉल्व के अंदर दैट इज योर स्टाफ एपिडर्मिडिस, देन पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर स्टाफ ओरियस, आईवी में स्टाफ ओरियस एंड स्यूडोमोनास, देन ओल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, देन प्रेग्नेंट के अंदर लिस्टीरिया, नियोनेट के अंदर में बेल, देन टीनेज के अंदर चिल्ड्रन के अंदर इन्फ्लुएंजा, देन टीनेज के अंदर में अगेन न्यूमोकोकस एंड मेनिंजाइटिस. नाउ इफ यू कंबाइन Hemophilus influenza along with your pneumococcus and your meningitis, then it is going to become what for the splenectomy. And from that, if you take out meningitis, that is the deficiency of C5B2 C9. After that, I have discussed for you the most common cause for fungal, that is cryptococcal meningitis. Arthropod borne अगर हमने उठाना, that is Borrelia, and the swimming pool one is your Naegleria. After that, we have the most common causes or rather viral meningitis के causes. So viral meningitis में आपको कैसे याद रखना है? Remember see, ये चारों पांचों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और वायरस की मेनिंजाइटिस को याद करने के लिए, वायरस की मेनिंजाइटिस को याद रखने के लिए आपको याद रखना है हमें, किसे? हमें. वायरल की मेनिंजाइटिस को याद करने के लिए आपको किसको याद रखना है? हमें मतलब H stands for HIV, ठीक है, A stands for arbovirus, M for mumps,
एंड ई फॉर एंटेरोवायरस. ओके, HIV, ठीक है, हमें इज HIV, arbovirus, M for mumps, and E for enterovirus. What are the things which you cover in arbovirus? Is your dengue, is your Coxsackie virus, is your Japanese encephalitis virus, and is your yellow fever virus. Okay, so hame means what? H stands for H stands for HIV, A for arbovirus, M for mumps, and E for enterovirus. Okay, now the parasites which are responsible: Plasmodium falciparum. If you remember, Plasmodium falciparum is responsible for causing cerebral malaria. Okay, so that cerebral malaria is going to include your meninges also. Okay, brain के अंदर ये काम कर रहा है. Negleria and Acanthamoeba. Okay, Negleria and Acanthamoeba, again very important. Tinea. Now remember that Tinea solium especially is responsible for causing cysticercosis. ठीक है, cysticercosis, उसमें भी neurocysticercosis. ओके, टीनिया सोलियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग neurocysticercosis. ओके, नेक्स्ट इज योर Echinococcus. Echinococcus is dog tapeworm. Okay, and if you can remember Trypanosoma toxoplasma, you can remember. Okay, so in parasites, what all organisms are there? Firstly, you remember Plasmodium falciparum. Next is Negleria, Acanthamoeba. After that, Echinococcus Tinea and Echinococcus granulosus, then Trypanosoma and Toxoplasma. Thank you so much for watching our video.